एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अनु कश्यप आर्ट स्टूडियो। मेरा नाम अनु कश्यप है। आज हम करने जा रहे हैं वाइप्ड बैक स्टिच। वाइप्ड बैक स्टिच करने जा रहे हैं। ये भी बहुत ही प्यारी स्टिच है हमारी। इसको हम सीखेंगे। थ्रेड द नीडल, make a end knot, six stitches, वाइप्ड बैक स्टिच। एंड एक बार पहले मार्किंग कर लेते हैं 0.5 mm की, ताकि स्टिच आपकी और भी ज़्यादा इजी हो जाए। For the entire line, first you have to make a back stitch. Wiped back stitch is a decorative embroidery technique that combines the back stitch with the wiped thread to create a raised braid effect. It is commonly used for outlining or decorative embellishments. Create a back stitch line first. Make a end knot. Cut the extra thread. Now take another color thread. Punch the needle from the point A. नाउ अब यहाँ पे हम लोग ये वाले कलर के थ्रेड थे स्टिच नहीं बना रहे, सिर्फ हम लोग यहाँ पे स्टिच के बीच से थ्रेड को निकाल रहे हैं। मीन्स ये हमने जो स्टिच बनाई बैक स्टिच, उसके सेंटर से हम लोग निकालेंगे ये वाला, ताकि डेकोरेटिव स्टिच बन जाए। तो अब आप ऐसे ही स्टिच के बीच से निकालेंगे
दूसरे कलर के थ्रेड को एंड ये हमारी ब्यूटीफुल स्टिच बनती जा रही है। देन बैक साइड नीडल को निकालेंगे और मेक अ एंड नॉट। कितनी सुंदर ये हमारी वाइट बैक स्टिच बन के निकली है, बहुत ही प्यारी डेकोरेटिव एम्ब्रॉयडरी स्टिच हमने सीखा आज। देन मेक अ एंड नॉट, कट द एक्स्ट्रा थ्रेड। सी फ्रंट साइड बहुत ही ब्यूटीफुल निकल के आया एंड बैक और भी ज़्यादा बिल्कुल क्लियर। सो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय।